Hello, this is your boy Imran signing off of YouTube and on to work. आज सुबह को ज़्यादा टाइम नहीं था वरना मैं क्वेश्चन कर लेता। मैंने पुरानी वीडियो बोलो कल जो रिकॉर्ड करे थे उसको एडिट कर रहा था एंड उसको अपलोड कर दिया जस्ट। अब आई थिंक अपलोड हो चुका है। ये चेकिंग प्रोसेसिंग जो भी है आई थिंक वो खुद से कर लेता है, वो उनके सर्वर पे हो जाता है, बट अपलोड हो चुका है। आई थिंक मेन चीज़ इज डन। आई एम गोना गो ऑफ टू वर्क नाउ। और एक अच्छी बात है, कल बहुत दिनों बाद मैं जिम गया ऑन ट्यूसडे। बिकॉज बाकी हफ्ते क्या होता था, मंडे जाता था, हफ्ते भर नहीं जाता था, फ्राइडे जाता था, सैटरडे जाता था। तो लाइक 3 दिन अ वीक, विच इज़ 3 दिन अ वीक इज़ नॉट बैड, बट आई फील लाइक डिसिप्लिन मेरा ख़राब हो रहा था। बिकॉज आई यूज टू थिंक कि और वीकडेज में भी जाऊँगा, वीकडेज में भी जाऊँगा, बट नहीं जाता था। बट कल गया। आई फील गुड अबाउट दैट एंड ह्यूज थैंक्स टू माई रूममेट। वो नहीं आता तो मैं नहीं जाता बिकॉज मैं बहुत थका हुआ था, बट ही केम एंड आस्क्ड। आई वाज लाइक हाँ चलो चलते हैं। That's the benefit of having a roommate with the same mentality as you. Same mentality, same habits as you, but तुम्हारे तरह का basically. So that's the thing. And मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे। यू नो काफ़ी शोर शराबा होता है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, एंड जस्ट पीपल शाउट। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को थोड़ी सी शांति चाहिए। हाँ, that's a fun fact, that's a trivia, that's a trivia that not necessarily random, but हाँ। तो हाँ मैं चलता हूँ। आई सी यू इन द निंग इवनिंग। ठीक ठीक है। There we go. There we go. Mic has been adjusted. Ah, shall we just start? Shall we start without further ado? Cause कल कुछ नहीं किया मैंने. I was tired and lazy, and it was one of those days जब मैं बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था के मैंने फ़ोन चलाया बस, और कुछ नहीं। जिम नहीं किया, बट दैट वाज फॉर डिफरेंट रीजन। बिकॉज मेरे कमर में दर्द है। फॉर आई थिंक जिम की वजह से ही मेरे कमर में दर्द है, बट खैर आज भी नहीं जाऊंगा कि आज भी दर्द है। व्हाट शुड आई डू? हम्म एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। बिकॉज अपन बकचोदी करने नहीं आए यहाँ पे। वी आर हियर फॉर बिजनेस। ओके, तुम लोग मुझे बकचोदी करते हुए नहीं देखना चाहते हो। तुम लोग क्यों बोल रहे हो मिस्टर जैक्सन? यू डोंट वांट टू वॉच मी डू बकचोदी, यू वांट टू वॉच मी गेट शिट डन, है कि नहीं? You want to watch me do it? Just do it. Am I right or am I right? Care. Don't mind me watching this. Care. ओ हाँ, ये क्वेश्चन उठा के रखा था मैंने, किया नहीं इसको। क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया एक्चुअली। के पॉजिटिव इंटीजर्स अरे वी काउंट नंबर के जनरेटर। एक सेकंड। ये क्या खोल के रखा मैंने? 800 का। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। 22 फरवरी को टाइम है, आज तो 19 ही है। ठीक है, वे अपन आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपन टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे। द रीजन मैं आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि इज बिकॉज मैं कभी कभी आसान क्वेश्चन में फंसता हूँ, तो दैट फकिंग हर्ट्स माई ईगो मोर देन गेटिंग स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। दिस इज लाइक ये तो बनने ही चाहिए, ये क्यों नहीं बन रहे हैं? यू नो व्हाट आई मीन। खैर खैर ओके, तो आई थिंक आइडियल जनरेटर ही था द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइन। गेट रेडी टू डाई। मैं तो क्या हरकत कर रहा हूँ मैं, जो मैं जैसे जैसे 16-17 साल का लौंडा हूँ, गेमिंग वीडियो बना रहा हूँ जैसे, एज इफ आई एम लाइक दैट। आई शुड बी मोर सीरियस। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। आई डोंट वांट टू एक्ट बिलो माय एज, यू नो। वो बकचोदी नहीं करना, वो फालतूगिरी नहीं करना चाहता मैं। क्या? वी कॉल एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ के पॉजिटिव पैलिंड्रोमिक। आई नो पैलिंड्रोमिक एरे क्या होता है, ठीक है। Let's not beat around the bush. For example, the array is 1 2 1 5 1 1 5. Do you want to watch my face? मुझे एक अच्छा कैमरा लेना है. I will take that. I'll do that.
मैं इंस्टा पे भी पोस्ट करना चाहता हूँ बट आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक पब्लिक, तो वही है। खैर, we call a number k an ideal generator if an integer can be represented as the sum of the elements of palindromic array of if uh, एक सेकंड, k is क्या? Consider k point integer, for example the thing that is k an ideal integer and can be represented as sum as a sum of the elements. If any integer n can be represented the sum of the elements of a palindromic array of length exactly k, each element of the array must be greater than 0. Okay. For example, the number 1 is an ideal generator because any natural number can be generated using an array n. And ठीक है, ठीक है, k size का okay. However, the number 2 is not an ideal generator. There is no palindromic array of length 2. अच्छा, हर इंटीजर के लिए ये this should be true, ठीक है. Yes or no if consisting of one integer k, ठीक है. So basically, what it's trying to say is like, suppose n is even, so any number greater than equal to n, say n is equal to 4, so k is equals to 4. So let's say n is equals to k. तो अब मुझे 4 साइज का 1 2 3 4 जितने भी सारे नंबर्स हैं मुझे उनको इनमें बांटना है, ठीक है. द थिंग बट even numbers is the thing about even numbers is that this becomes difficult, right? Because let's say 4 or 1 1 1 1, that's 2 को अगर बांटना है, मैं 1 1 नहीं बांट सकता के साइज का 1 1 palindromic array. How is 2 not palindromic? Because any natural number, the number 2 is not an ideal because no, अच्छा sum 3 3 3 3 3, ठीक है, तो even के लिए तो चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा. Now what about 5? ठीक है, 5 is like किसी एक को तो देना पड़ेगा. So just plus 1 is going to be difficult. तो अगर कोई भी even size का है, that's going to be bad. अगर कोई odd size का है, that's like 1 2 3, some even number and then 1, ठीक है. This is how you make an odd number. यहाँ पे सारे वंस डाल दो, यहाँ पे सारे वंस डाल दो, यहाँ पे 1 डालो, एंड एज यू इंक्रीज यहाँ द नंबर, यहाँ पे तुम बढ़ाते जाओ. सो इवन और ऑड का खेल है. गुड इनफ, आई मीन फास्ट इनफ. Do you think I was fast enough? Do you think I was fast enough? Miss Jackson, do you think I was... I did that in a quick way. I think I should move on to 1400. We'll do 1400 now. अपन लोअर लिमिट सेट कर लेते 1400 का राइट आफ्टर दिस. D95G. Do you think I'll ever be famous? Do you think that? खैर तुम्हारे सोचने से क्या होता है? If you could predict the future, you'd be a millionaire. I'd be a millionaire, billionaire in even. Who knows? And yeah. If k mod 2 is equals to 0, C out, no, else C out. I feel something in my heart, not in my heart, in my chest. I feel my heart sinking in my chest. I don't like this feeling. क्यों आ रहा है? I don't know. Probably because I am not happy with my life.
Can yes, no, yes, yes, no. We're gonna submit this. Desktop shit. Have you played Clash of Clans? Have you played Clash of Clans? मैं तुम्हें बताता हूँ Clash of Clans की एक इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है? So basically अगर तुम किसी चीज़ पर अटैक करते हो, तुम क्या, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? इमेजिन there's a base और तुम्हारे पास बहुत सारे बारबेरियंस है and तुम उनको लेके जाके अटैक कर रहे हो. I actually tried this, ठीक है? I was like okay, ठीक है, एक साथ छोड़ू या एक एक करके छोड़ू, it should not make a difference. It does make a difference though. 1300 का करता हूँ, 1400, 1300 should not be that bad. हाँ तो सेम विद प्रैक्टिस. किसी ने 100 क्वेश्चन किए बट उसने 100 क्वेश्चन एक महीने के अंदर किए हैं और मैंने 100 क्वेश्चन 100 दिन में किए हैं. there's a difference between us because हाँ, I mean obviously he's gonna, because इसने पुश किया अपने आप को इतना और like he pushed himself a lot, whereas me is like थोड़ा सा पुश किया फिर थोड़ा सा. So it's like by the time the next push comes I've already dropped down. So I think you get what I mean. I like this already. Misha at the IT campus. Neymar. Opa! Oh, Neymar. London topic यूक्लिडियन. पता है मैं कितना कंफ्यूज हो जाता हूँ. यूक्लिडियन कितनी 2-3 चीज़ें एटलीस्ट जिनको यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं. एक तो ग्राफ से रिलेटेड है कुछ, इसमें भी है दो चीज़ तो है कम से कम. ये नाम लाइक कुछ तो ऐड कर दो ना साथ में. यूक्लिडियन जीसीडी एल्गोरिथम और समथिंग. स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं फोन. back to business. Back to, should I be चुप थोड़ा सा ज़्यादा. He was somewhat surprised when he realized that he had to be blah blah blah. The details numbers and so much thought that's the part of it. This made him to consider their quotient, ठीक है, LCM by GCD. For somebody took to we computed f is equals to obtained a prime number. A number is prime basically to be interesting ratio if and a this is a prime number, ठीक है. Okay, since Misha is just studying number theory and how many different pairs of numbers A and B there are such that is interesting ratio and ठीक है. Okay, n is to number 7. Can I iterate n? Yes, I can iterate over n. Will I iterate over n? Probably not. I feel like इस क्वेश्चन में जिस हिसाब से चीज़ें दी हुई है I don't need to iterate over n like that. बोर्ड खोलते हैं ना before I fall asleep. शायद ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का. एटलीस्ट इसके बाद ब्रेक लूंगा छोटा सा. मैं एक
Okay, so A is equals to GCD. um, नहीं, just let's say L is equals to LCM of A and B, and then G is equals to GCD of A and B. ठीक है. Now अगर A and B same है या फिर there's some factor or something involved, तो LCM least common multiple is going to be the max of this, or like basically A into B is equals to LCM A comma B to GCD. अरे तेरी शॉर्ट हैंड मैंने किस लिए लिखा, वेरिएबल में स्टोर मैंने क्यों किया. L into G. Now the thing is G, this is equal to into G. ठीक है, this is the thing. Now the thing is इसको G से divide करना है, तो this is gonna be like G square. तो this is gonna be, so you mean to say कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ए बी से छोटा है, तो मतलब बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स की बात हो रही है और खुद को नहीं ले सकते हैं अपन. ठीक है, तो किसी भी ए को ले रहे हैं, बी की रेंज इज a plus 1 to n. That's it for all a's. So that brings us to this a into b by g square. This has to be a prime number, you say. Now to make this a prime number, imagine a or b है co-prime, then that would mean कि GCD is 1. So a into b हो जाएगा, and a into b is obviously not a prime because it has two factors, a and b, and हम 1 को नहीं कंसिडर कर रहे. अच्छा 2 ओ नहीं, सेकंड 1 को फिलहाल अपन नहीं कंसिडर करते, because let's say 1 है, 1 into some anything is going to be like b, and then b by, like, basically it's going to be b. ठीक है, तो 1 को सारे प्राइम फैक्टर्स से इससे अपन पेयर अप कर सकते हैं. अब लेट्स लीव 1. सो a into b can't be co-prime. We have made that much clear. तो कोई कॉमन फैक्टर होगा, एंड उसका लेट्स से कॉमन फैक्टर इज GCD, उसका स्क्वायर होगा ना. वो कॉमन फैक्टर इससे भी हट जाएगा और इससे भी हट जाएगा, बिकॉज GCD इज अ कॉमन फैक्टर. सो यहाँ से भी हटा, यहाँ से भी हटा. अब द थिंग इज ना, अगर अगर वो बचा, अब इसके बाद भी अगर a डैश बचा रहा और b डैश बचा रहा, तो दिस इज स्टिल नॉट गोना बी अ प्राइम नंबर. यू नो व्हाट दैट मीन्स इज a को कंप्लीटली जाना होगा और b dash should be a prime number. So GCD of a and b should be a, and b has to be some prime number into a. Got it. So b has to be multiple of a and some prime multiple of a. So like 2, 3, 5 ऐसा. Okay, got it. I think I know why is it n तक, and then सारे प्राइम, I mean 10 to the power 7 तक तुम जस्ट 10 to the power 7 तक सारे प्राइम नंबर्स निकाल के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाइड बाय दैट प्राइम नंबर टिल इट एक्सीड्स. सॉर्ट ऑफ गेट इट. मुझे चेयर से निकलना है. गिव मी टाइम. Hi. Okay, so I think I might have some good observation. Let me show you. ठीक है. So imagine that मेरे पास एक array है बहुत बड़ा. A को मुझे आइटरेट कराना है from 1 to 10 to the power 7. Okay.
and then I have to iterate. I have to find like prime multiples of a, right? So imagine this is n and pehla prime will be 2, so half. This is n, right? So half of this, और फिर यहाँ पे कोई prime number होगा उसका multiplied by 2 is gonna come here. एंड ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, तो n तक जितने प्राइम नंबर्स होंगे मैं उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 को. फिर देन इज गोना बी a इक्वल्स टू 3. सो n बाई 3 तक जितने प्राइम नंबर्स होंगे मैं उससे उनसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सो इट्स लाइक 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n बाई 2 प्लस 3 इंटू, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आइटरेट कर रहा हूँ मैं उतना, into n by 3. So that would basically mean n into n square. Of course you cannot afford that, so हमारे पास एक कुछ और होना चाहिए. A list of all prime numbers, ठीक है, let's call it PL, P list, ठीक है. So I'm just gonna keep iterating over this for I equals to 2, no, 1 I less than equals to n I plus plus, and while j is equal to 0, while p list of j multiplied by I is less than equal to n. जब तक ये चीज़ है तब तक j plus plus and j is less than equal to जो भी size है इसका sz or something. Let's assume उसका size is sz. Let's assume इसका size is s, ठीक है, and j is less than sz, ठीक है, j plus plus and you're gonna have count plus plus because उस I के लिए बढ़ रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं उतना, and just like that you're gonna be able to find all the pairs because मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ. That's perfect. So just basically just have to find all the prime numbers from 1 to 10 to the power 7, 1 to n, और उसका होता है कुछ sieve algorithm यूज़ कर सकता हूँ मैं. I'm pretty sure मेरे टेम्पलेट में लिखा हुआ है sieve algo, divide sieve 2 primes, return primes. नहीं, ये दूसरा वाला sieve है. This is a different kind of sieve. बट एक्चुअली मैं इसको यूज़ करके भर सकता हूँ अपनी जेब में सारे नंबर जो एक्चुअली में प्राइम है, एंड मैं वही करने वाला हूँ जिसके भी 2 बार आइटरेट. हाँ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वरना मैं एक और लाइक सीधा एक ही लूप चला एक ही बार फंक्शन कॉल करके मैं कर सकता हूँ. मैं एक बार चेक करता हूँ अपने उसमें गिटहब में मेरा वो पड़ा होगा टेम्पलेट पुराना जिसमें ये जो जिस एल्गोरिथम की मैं बात कर रहा हूँ वो लिखा हुआ है. लेट मी शो यू पिन बोर्ड. जैसे बॉयलर प्लेट, ठीक है, यहाँ होगा कहीं पे. नंबर थ्योरी finds all factors of polynomial, finds it as binary या नहीं, it is list of primes up to n. okay, this ये वाली चीज़ primes and prime list to ठीक है, ये वाली चीज़ राइट, रिटर्न प्राइम लिस्ट. नहीं एक सेकंड, ये वाला रिटर्न प्राइम्स, ठीक है. ओके इफ प्राइम, ओके, तो बेसिकली ये भी वही कर रहा है. अगर 1 है तो घुसा दो उसको उस चीज़ के अंदर. फॉर्क वर्क नहीं करना यार, अगर 1 है तो घुसा दो उसको बेसिकली. तो यहाँ पे मैं इसको एडिट कर सकता हूँ थोड़ा सा.
यू ठीक है तो जो प्राइम है तो उसके प्राइम लिस्ट के अंदर डाल दो एंड देन जितने भी प्राइम्स थे वो सारे मार्क पे जाएंगे एंड हाँ ठीक है समझ गया गिव मी अनदर मोमेंट मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए फिर से आई डोंट फील गुड मैं हाँ just give me a moment hello I'm back I have come to a conclusion to a realization to an epiphany if you will this is who I am a coder this is my destiny I must accept my destiny क्वेश्चन पे वापस चलते हैं ये क्वेश्चन खत्म करूंगा फिर खाना चीज़ ऑर्डर करूंगा पनीर ऑर्डर करूंगा आफ्टर दैट आई एम गोना वॉश माय क्लोथ्स क्या मैं नहाऊंगा इट्स टू लेट इट्स कोल्ड आई एम नॉट गोना शावर बट मैं I'll just oil up because I think my skin is dry तेल मल लूंगा on my body think that will feel good that will be good for the skin and then I'll solve some more questions खैर आई थिंक पेन इसका काम हो गया अब सीधा सीधा कोडिंग का काम बचा है yes okay how many primes I don't think ज़्यादा primes है but how many primes before 10 to the power 7 how many primes before how many prime numbers before 10 to the power 7 okay these many prime numbers and it's like 2 3 4 this by 2 by 2 by 3 by 4 listen the thing is हर एक नंबर को लेके हर एक प्राइम नंबर को लेके मैं वो कर सकता हूँ एक्चुअली यू नो व्हाट मुझे हर उस पे जाना भी नहीं पड़ेगा okay so after I have the list of prime numbers let me do this after I have the list of prime numbers let's say p1 p2 p1 p2 p3 blah 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 pk pk एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मेरे सीनियर्स आज I'll come to that later क्या p1 p2 p3 pk p1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऑल सो ऑन up till let's say some number I don't know r multiplied by p1 where अब मुझे इतना करना है कि r1 let's say r1 is the limit r1 multiplied by p1 is less than equal to r is the biggest number such that this is less than equal to n so r1 should be less than equal to n by p1 and r is an integer so this is going to be n by p1 ka floor so this means कि just सारे प्राइम फैक्टर्स लो और 1 से लेके like n by that prime factor and उसका seal and that's the number of count for that prime factor got it got that इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं sieve2 है sieve1 कहाँ है well if it's sieve1 let us make that vi sieve1 lln vi primes n plus 1 1 vi plist is going to be empty therefore primes 0 primes 1 0 for I is
2i less than equals to ni plus 1 if primes I, then p list dot pushback I for and j is equals to I multiplied by I, j less than equals to n, j plus by I primes j is equals to 0. Then we go return p list return करना है, right? C1 and then we have काम करता हूँ ना p list, let me make एक ही बार में सब कुछ. So in vi lop list of primes, then we have lop is equals to c1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ठीक है. लिस्ट ऑफ प्राइम्स अगर मैं लूँ p list list p because मैं confused and you know what, छोड़ lop लेता हूँ. lop fill it up with this int n in n int answer is equal to 0 for int I equals to 0 I less than lop का साइज कितना है? lop dot size I plus plus int j is equal to 0 while excuse me. Also n से कम तक का मुझे देखना है, right? If lop of I is greater than n, then break. Otherwise answer is plus lop of n divided by lop of I, n divided by that prime, and this is going to be the answer. Should be correct. This is it. Physically, mentally, I am at my peak, like condition wise. Like बचपन में होता है ना कि बच्चे को तुम कैलकुलस पढ़ाओगे तो उसकी औकात नहीं है. मेरी औकात है, बन चुकी है मेरी सब चीज़ों को करना, और just a matter of me willing to put in the work. Because potential अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है मेरा. I can become a grandmaster. I have everything I need to become a grandmaster right now. That's the thing. ठीक है, तो I'll do थोड़ा सा घर का काम फिर I'll come back. Back again after doing some chores of the household. Hi. He. Hi. Ah. What's the daily limit of caffeine before you build a tolerance? Because I think I've built some tolerance. ऐसा नहीं होना चाहिए था. मैं नहीं चाहता कि टॉलरेंस बिल्ड हो जाए, फिर मुझे और कैफीन लेना पड़ेगा. लेट्स लुक एट दैट. 12 बज रहे रात के, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक. आई एम थिंकिंग खाना खा के किसी दोस्त आ जाएगा तब मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहता हूँ. उससे पहले मैं क्वेश्चन कर लेना चाहता हूँ. सो हाँ, क्वेश्चन करके फिर बाकी चीज़ें.
daily limit of caffeine before you build tolerance. There isn't a fixed tolerance, but you should get useful and yes, very little building notice for tolerance. Oh, easy then. कोई दिक्कत नहीं है. एक I think बहुत 30 मिलीग्राम कैफीन अप्रॉक्स मैंने लिया अभी कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम सेट. दिस थिंग एक काम करते हैं ना, पेज 2 करता हूँ. होपफुली ये चेंज होगा. हाँ, तो अब इसको कंट्रोल सी एडिट. देयर वी गो. ठीक है, अब पेज 2 खुलेगा सीधा. 1200 वाला करते हैं. 1200 वाले पे फंसा हूँ मैं काफ़ी बार. डिव 3D big ass question. Let's read this. For the final round of the first Olympiad by IT campus. एक सेकेंड. नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था. आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन मैंने पढ़ा था आज ही. खैर, a rectangular venue is prepared. You must assume that the venue is divided into n rows, each containing m spots for participants' desks. ठीक है. Total of k participants have registered for the final, and each participant will sit at an individual desk. Now the organizing committee must choose location for the desk in this venue. ठीक है. Each desk occupies one of the m spots in a row. Moreover, if several desks occupy consecutive spots in the same row, we call such a group of desks a bench. And the number of desks in the group is the bench's length. ठीक है. For example, seeing 7 participants on a 3x4 menu can be arranged as follows. In the figure above, the first row has one bench of length n, length 3. The second row has one bench of length 2. The third row has 2 benches of length 1. Organizing committee wants to choose the locations so that the length of the longest bench is as small as possible. In particular, the same 7 desks can be arranged in a more optimal way such that the lengths of all benches do not exceed 2. ठीक है. Given m, n, and k, n, m, and k, determine the most minimum possible length of the longest bench. Okay, easy. Not a difficult question at all. Each test contains multiple test cases. The first line contains each single line. ठीक है. n, m, k is the number of participants that I have to set. K is the number of boxes that I have to fill. N into m is the size of the matrix. Each test case output a single number, the minimum possible length of the longest bench. मैं बाइनरी सर्च कर सकता हूँ गिवन कि benches are okay. Of course, why speaking when we can write? I know binary search is not necessary, but actually binary search is necessary. I think. और कैसे पता करोगे? Given an n, given an say means length L. ठीक है. Is this the min bench size? We have m columns, seats in a row, and n rows. So how many seats can be assigned in a row?
m साइज का रो है एंड you're saying कि k लेंथ का वो होगा, sorry l लेंथ का होगा and then there's gonna be a gap. So l plus 1 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ m डिवाइडेड बाई l plus 1, ठीक है. सो m plus 1 डिवाइडेड बाई l plus 1, कजन इमेजिन एक और है और फिर तुम ये कर रहे हो. तो इधर परफेक्टली डिविजिबल होगा या नहीं होगा. अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो बहुत अच्छी बात है. दैट इज द आंसर, दैट इज द मिनी आंसर एम ए. और अगर अगर छोटा हो उससे, लेट्स से लाइक फ्रैक्शन में आया, तो लेट्स से यहाँ तक परफेक्ट था और फिर उसके आगे वी कांट डू मच मोर, तो कोई दिक्कत नहीं है. You just get the quotient of this, that is the number of, like, quotient of this is equal to m plus 1 by l plus 1 multiplied by l, तो इतने सारे सीट्स असाइन हो गए, प्लस m माइनस दिस थिंग. सो m माइनस जो भी क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है. तो क्वेश्चन इंटू एल सीट्स असाइन हो चुका है. m माइनस क्वेश्चन इंटू एल प्लस, नहीं नहीं एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन इंटू एल प्लस 1 उतना हटा दो तो उतने बचेंगे. दिस प्लस क्वेश्चन इंटू एल. These many seats can be assigned from every row. This multiplied by n is the total number of seats जो अपन ले सकते हैं. Now if this whole I don't know, sum of seats, if this sum is greater than equal to k, then yes, possible. Then जो भी अगला iteration होता है बाइनरी सर्च का. So this was the main formula, m plus 1 by l plus 1. Because I was thinking divide by l plus 1, फिर एक छूट गया होगा तो उसके लिए ऐड प्लस 1, बट फिर ज़्यादा नहीं हो जाएगा. कुछ फ्रैक्शन होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. आई थिंक माई मैथ्स मेक्स सेंस. गिट बैश. D109G. थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. गुड, बेटर. नाउ हाँ, एन एम और के इंट एन एम के सीन एन एम के. ऑफ कोर्स एक सीट में n का लोअर लिमिट क्या, 1 एंड हाई शुड बी m. ऑफ कोर्स m से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते और कम से कम एक तो होगा ही. So this thing, hope it is recording with the mic only. Hope it is recording with the mic. Okay. Int mid is equals to. Now, do you think I act too much? Do you think मैं pretentious हूँ थोड़ा थोड़ा? Do you ever think that? If check of क्या mid भेजूंगा, n भेजूंगा, m भेजूंगा
के भेजूंगा, इतना ही है मेरे पास भेजने को. देन अगर ट्रू है तो ऑफ कोर्स आई वांट टू फाइंड minimum, right? So high is equals to mid minus 1, int answer is equal to but 1 the m answer is equals to mid, else answer is equals no, low is equals to mid plus 1. See out answer new line. अब it is about bool check int mid int n int m k. Now int quotient being kq is equals to m plus 1 divided by l, which is length mid plus 1. Now that we have the quotient, it is about the sum is equals to q multiplied by l sorry, इसको l ले लेता हूँ ना, बिकॉज मैंने अपने नोट्स में l लिखा है. l plus 1 l plus m minus q multiplied by l plus 1. ठीक है, so this is gonna be, listen, can it be 0? Could be int max of 0 0 or whatever this is. ठीक है, there we go. So just if sum is greater than equal to k, return true, else return false. Should work. Oh, remnants of previous question. Let's delete this and hut. रग्बी में बोलते हैं हट. 5-1 ओके. 4-5-1-4-2 4-5-1-4-2 ओके. पहले वाले का होना चाहिए था 2. इज दैट नॉट 2? हाँ 4 okay. शुड अगर 4 हुआ और वो 4 है तो ये क्या देगा? शुड गिव मी ट्रू, राइट? m plus 1, so 4 plus 1 or 4 plus 1, it's 1, तो 1 into 4. ओ इस पूरी चीज़ को उससे मल्टीप्लाई करना मुझे n से, मैं ये भूल गया. सम मल्टीप्लाइड बाई n. टू 1-1-4-2. Not don't know how this passed. Probably just a coincidence. उस केस में वेरिएबल्स और नंबर्स इस तरह से थे कि पास हो रहा था. लेट हो रहा है, आई शुड ईट, मगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ. आई नो दिस इज राइट बट मुझे एक और क्वेश्चन करना है. ओके, वन मोर, गिव मी अ गुड वन. Give me a good one. 1500. They should tickle my
brain. I like this. I like this a lot. Akito decided to do you love your hero and his two hit. मुझे यहाँ तक मुझे लगा कुछ अच्छा टाइटल होगा. खैर आई मीन आई शुडंट जज दिस. यू नो किसने मेहनत करके पैशन के साथ people who do this stuff are passionate about this. You know, I have respect for that. And you know what? This is a good title actually. I was mistaken to doubt this. This is a good title. ठीक है. Akito decided to study a new powerful spell since it possesses immeasurable strength and certainly requires a lot of space and careful preparation. For this, Akito went out into the field. Let's represent this field as a Cartesian coordinate system. ठीक है. Cartesian was, I think, French or something. Or maybe German, I'm not sure. But I read about him in मेरी maths की textbook में. For the spell, ninth class में. That was good. You know, that was good. For the spell, Akito needs to place zeros and say like 500 staffs at distinct integer coordinates in the field such that there will be exactly k pairs. Huh. So needs to place staffs at distinct integer location in the field such that there will be exactly k pairs. I such that P of j is equal P of I j is equal to D of I j. टू लेट में कैसे एक यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा एक वो होगा जो दूसरा वाला डिस्टेंस है ए बी पी ए बी इज इक्वल्स टू एंड दिस थिंग. ठीक है. The number of pairs of staff for which the equality must hold. The first element of the output should be the number n, the number of place staffs. The coordinates of the highest are the points in which staff must be distinct. अच्छा तो मुझे k दे रखा है मुझे n, so constructive problem basically. Okay, quite interesting. You know what, मैं इसको अपने में बनाऊंगा. I think आज अभी तक के लिए काफ़ी रिकॉर्ड कर लिया मैंने stuff. I really want to just sit in front of the camera or yap or blabber about stuff. Just regular stuff, not personal stuff, you know, not technical stuff. I'm confused. Should I मुझे एक whole ass phone खरीद लेना चाहिए या फिर एक GoPro types कुछ लेना चाहिए? Because I also want to look good in the camera. I want it to like be proper good definition. But then again, I also think कि phone might be a better choice. Because फिर I'm getting a whole ass phone वाली चीज़ें कर सकता हूँ मैं. Having two phones is good. Plus a camera, but I don't think phone ka camera compares with a DJI Pro or something. I'll think about it. Thank you for watching. Thank you for being my friend. Thank you for listening to me, Mr. Jackson. Have a nice night. Have a good night. I'll थोड़ा सा ये करूँगा फिर I'll eat. Maybe I'll eat and then do this. So yes, have a good rest of your day. Bye. Goodbye.